and initiatives to promote tourism and project India as an attractive tourist destination. So now I will give it over straight away to the Minister, because we are also expecting Rural Development Minister. So there can be a joint session also possible. So, sir, over to you. Huh? Yeah. Respected editors from the different media groups, respected Shri Frank Narona ji, my friend Sanjay, it's my pleasure to be here. Other than the Minister, as a emotional attachment of being a Rajasthanite by birth. I was born in Rajasthan and had my early education till 10th class in Alwar of Rajasthan, and now shifted to Uttar Pradesh, Noida, and with my first presence as a Member Parliament and getting responsibility of the ministries, Honorable Prime Minister has given me this responsibility of tourism, culture and civil aviation. Tourism, as you have all known, that it is very close to the heart of Honorable Prime Minister. Wherever he has gone, should I communicate in Hindi or English or a mix of both, that? Both, a mix of that? Mix. I think that will be better. वैसे मैं राजस्थानी आदमी, हिंदी में बोलने में बड़ा ज्यादा मजा आएगा। मगर साउथ से भी लोग आए हैं। तो इट विल बी अ मिक्स ऑफ दैट। हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा था, दिल्ली में जाके एमबीबीएस करनी पड़ी। तो किसी दिन मजाक में पूछ रहे थे हमारे कांग्रेस के अपोजिशन लोग कि अंग्रेज, मैंने कहा अंग्रेजी में थोड़ा सा हाथ तंग है, वरना हमारी भी ससुराल कहीं इटली या कोलंबिया में होती है। और दोस्तों, I also take this, I live in Noida, and which is the hub for media groups. Almost all media, national, international channels and media groups have got a presence in Noida. लगभग सभी media groups की वहां presence है। और पेशे से, because I was a doctor, so I was very close to them, not as a politician but as a professional also. So I used to learn a lot from them. And I got a very good initiative, or what you say, advice, what a friend of mine gave to me, which I followed for the part of my life. उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि जो आदमी जनता से ज्यादा समझदार और मीडिया से ज्यादा जानकार, अगर पत्रकार से ज्यादा जानकार अपने आप को समझे, वो मूर्ख है। और उसके पीछे उसने एक्सप्लेनेशन दी। Any person who considers himself more knowledge than a patrakar, a correspondent, and more intelligent than public, he is a fool. I will not like to be called a fool. And he gave a reason that public of Bihar can do wonders, and public of Uttar Pradesh can also do wonders, giving 73 out of 80 seats in Uttar Pradesh. And I believe that a correspondent is an entity, which in the morning hours he will be somewhere in the Juggi cluster, and maybe by evening he will be dining with the Prime Minister. That is the variation. सवेरे हो सकता है झुग्गी की क्लास में कहीं खुफिया पत्रकारिता कर रहे हैं और शाम को प्रधानमंत्री के साथ हो सकता है डिनर भी हो रहा हो। तो इतनी वेरिएशन पत्रकार में ही पॉसिबल है, बाकी किसी क्लास में पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए उसने सही बात कही। साथियों, मैं समझता हूं कि ना टूरिज्म इज अ इकोनॉमिक ड्राइवर इंजन, एंड दैट इज व्हाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज कंसिडर्ड दिस at the highest priority, whichever countries he has visited, wherever he has gone.
he has always talked of the tourism as a tool of economic driving, a tool for women empowerment. More of the women are associated with this tourism industry, and as a employment generator for the youth. And if we talk of the three things which we need for especially for the tourism, the strengths or weakness, whatever we call of the tourism, the cleanliness, the safety, security, and hospitality. That is our strength. We, the Indian people, and especially the Rajasthanite people, are known for hospitality. That is our strength. Prime Minister has linked all tourism projects with the cleanliness drive. We have made our logo, our ministry, that Swachh Bharat, Swachh Paryatan, Clean India, Clean Tourism, Swachh Bharat, Swachh Pakwan, Clean India, Clean Cuisine. And that is our strength. We have made our tourism destinations, the monuments, the visiting places, tried to make them clean. And in last 1 year of almost about my ministry and 18 years of our government, we have taken certain initiatives in the field of tourism, which I like to share with you on this occasion. Let me compliment our India and we all that World Economic Forum has placed us by 13 rank up. On World Economic Forum, it was Davos, Switzerland. Our rank was at 65th position. And now we are ranked at 52nd position, a jump of 13 points, which goes to the credits of our country, India. That is an indicator कि एक बच्चा जिसका एग्जाम हुआ और उसका रिजल्ट पहले आ गया, तो मैं समझता हूं हमारे पर्यटन मंत्रालय की पहचान हमें इंटरनेशनल फोरास पे भी मिली कि we got a jump of 13 points in the World Economic Forum. This time we have tried to change our tourism vision. The earlier scheme of developing destination and circuits of tourism by a scheme called PIDDC, Project Infrastructure Development of Destination and Circuits, has been totally withdrawn by the government. It was in presence for last so many years. And two new theme-based schemes have been launched. One scheme is Swadesh Darshan and another scheme is Prasad. Swadesh Darshan has been totally divided into 12 circuits. There will be all theme-based circuits where we'll have Buddha circuit, Krishna circuit, coastal circuit, Himalayan circuit, rural circuit, spirituality circuit. So all this tourism has been divided into theme-based circuits. And we understand that worldwide, even not in India, spirituality has been a key factor in tourism, be it domestic, be it international. If we start from Rome or Makkah, Medina, the same thing lies with our spiritual, where in Kumbh Melas millions of people gather together. That is a classical example of the spiritual strength of the world. We, the India, is a step ahead of that, no doubt about that. And using that strength of spirituality, we have taken into account our scheme of Prasad, Pilgrimage Rejuvenation and Spirituality Augmentation Drive, where in the first phase we have taken 13 cities of our country to develop as spiritual centers. And those 13 cities are Mathura, Kedarnath, Velankani, Pushkar, Ajmer,
All these cities has been, 13 cities has been taken. If you want those names, then I can give the names of those. We'll circulate it also. Ajmer, Mathura, Gaya, Kanchipuram, Velankani, Dwarka, Puri, Amravati, Kedarnath, Kamakhya and Patna. So that is our strength. That we are making this spirituality as also our strength in this our field. Along with that, what is our strength is that we are trying to develop these tourist destinations. In first phase, we have taken 35 monuments in first year, which will make them clean, will make them safe, and will make them hospitable. The Indian government has got 115 of our monuments and 35 museums, which are ticketed museums, with a nominal amount of 10 rupees or so has been the tickets museum, except Taj Mahal and some of our UNESCO destination sites. So in the first phase, we have taken a stock of these so-called the most visited tourist destination, and we have tried to make them cleaner with the help of Paryatak Mitras, employment of Paryatak Mitras, making them safer for the tourism, and we propose to make E2E tourism, end-to-end tourism. When we receive any tourist at any of the inlet points of our airports, especially the international tourists, we welcome them. This is the first initiative of the government, that as soon as an international guest comes to an immigration counter, he is being given a welcome card, which we propose now to give him a welcome kit. That welcome card, other than welcoming on behalf of India, and then certain do's and don'ts, then we have taken a big initiative after emergency, after our independence, that we have started a national helpline, 1363, or on a toll-free number 1800 111 363, 1800 111 363. This domestic line was available in two languages by now, Hindi and English. Now it is ready in 12 languages. If a Japanese tourist or a Russian tourist or a Chinese tourist is stuck up somewhere, he will call this helpline number and he'll be connected to other language of his choice, and he'll get a reply back in his language. That's a big initiative we have taken, because otherwise people used to be lost. We propose that as soon as the person comes at an airport, international airport, at present 16 number of our airports are with this facility, they will be given a kit which will contain a pre-activated SIM also. Because you know that normally if you take a SIM, it takes about 6 to 8 hours to activate it. That we are in touch with the ministry, that they give this, because of security reasons it was withdrawn some time back, but now we propose to start it again, that they get a pre-activated SIM, so that as soon as they get down on the airport, they can connect themselves to the domestic help, or they can connect to their residential place. In that kit, we have written very smaller things of do's and don'ts. Like a very small initiative, whenever a female tourist boards a taxi or takes a vehicle from the outside the airport, my daughter taught me this, that just take a picture of the number plate of the vehicle and pass it on to one more destination, any close friend or anyone of yours. So now the taxiwala knows that my number is registered in his mobile, and even if he loses his mobile or his mobile is destroyed,
this number has gone to some other destination also. So you take some precautions as a part of safety. Other than all measures, they have been given to that certain 10, 20 points have been given that please take care of this. That will remind of the safe tourism. Second thing, you all are aware that this government has taken a big initiative of e-visa on arrival. And if we count in percentage-wise that how much percentage is the growth, it sometimes seems that a gossip. Because earlier we had a very limited visas on arrival, and that number of visa on arrival was in thousands. Now this one number has gone to 4,45,000. On 29th November 2014, our government took this initiative of e-visa on arrival, और आप समझिए 29 नवंबर 2014 से सरकार आने के बाद अब तक 4,45,000 लोगों ने इस फैसिलिटी को यूज किया है, और जो परसेंटेज वाइज काउंट करें तो 1200% की ग्रोथ शो हुई है. मैं उसे परसेंटेज में नहीं देना चाहता, और सरकार का वादा है कि इसी बजट ईयर तक हम इसको 150 कंट्रीज ले जाएंगे. अभी हम लोग 113 कंट्रियों को ई वीजा फैसिलिटी दे चुके हैं. ये बहुत बड़ी बात है कि विश्व के लगभग 193 देश हैं, जिनमें से 150 देशों तक हम इस ई वीजा फैसिलिटी को ले जाएंगे, और जिसमें 1200% की ग्रोथ हुई है. भारत सरकार ने अपनी एक और स्ट्रेंथ, मेडिकल टूरिज्म. हमारे आसपास बहुत छोटे छोटे देश हैं, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, जो मेडिकल टूरिज्म को अपनी स्ट्रेंथ यूज करते हैं. They use this as a strength, where India has got everything for the medical tourism. आज अगर लंदन की नेशनल हेल्थ स्कीम से इंडियन डॉक्टर्स विड्रॉ फ्रॉम their national health scheme will collapse within 48 hours. Believe it, that is your strength. It means when UK people can accept our Indian doctors in UK, why cannot we avail that strength of ours in our country India? Making use of that, कि आज अगर आप हार्ट की बाईपास सर्जरी कराना चाहें या अपना नी ट्रांसप्लांट कराना चाहें, तो लंदन और अमेरिका में आपको 3 महीने से 6 महीने की डेट मिलेगी. और हमारे यहां अगर आज आप इसी वक्त प्लान करना चाहें, तो हो सकता है कल शाम तक आपकी इन दोनों में से कोई भी सर्जरी प्लान करके सर्जरी भी हो जाएगी. और वो भी नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर हार्ट की बाईपास सर्जरी की कॉस्ट करीबन 20 से 25 लाख रुपए है. आपके हिंदुस्तान में वो 3 से 4 लाख रुपए है, यानी 6 गुना कम कीमत दर पर. यस, कम है और भी कम है. देखिए, आप हमें सूचना दे रहे हैं कि इट इज पॉसिबल एट 1 लाख ऑल्सो. सम ऑफ द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग, और हमने उन्हीं लोगों को अपनी स्ट्रेंथ में लिया है. इस बार जो हमने मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म बोर्ड बनाया है, ये पहला इनिशिएटिव है आजादी के बाद. लोग अपने ढंग से मेडिकल टूरिज्म कर रहे थे. कोई केरला के अंदर अपना नेचुरोपैथी स्पा का कर रहे थे, कोई हेल्थ बाईपास सर्जरी हो रही थी. भारत सरकार ने उन सबको अपने एक अम्ब्रेला के अंदर में लाकर, जिसमें हमने डॉक्टर नरेश त्रेहान, डॉक्टर देवी शेट्टी को लिया है, जिसमें योग गुरु रामदेव को भी लिया है, बेंगलोर के योगा इंस्टीट्यूट के फाउंडर डॉक्टर HR नागेंद्र को भी लिया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर SS अग्रवाल जो ही जयपुर से हैं, उनको भी लिया है. ऐसे लोगों के साथ मिलकर वी हैव मेड दिस ए नेशनल मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म बोर्ड, जो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ बनेगा. और पिछले 3 वर्षों में मेडिकल टूरिज्म के अंदर इंडिया ने 25 से 30% ग्रोथ दिखाई है. हम अपनी इस ताकत को भी इस्तेमाल करेंगे. इनक्रेडिबल इंडिया हेल्पलाइन हमारे प्लानिंग है, बहुत जल्दी 2 लैंग्वेज में तो चल रही है. हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना की है कि वो इसको लॉन्च कर दें. और उसके साथ साथ एक 35 मॉन्यूमेंट्स पे एक मोबाइल ऐप क्लीनलीनेस का, कि अगर कोई भी आदमी वहां पर अगर कूड़ा गंदगी देखता है हमारे किसी भी डेस्टिनेशन पर, तो वो अगर हमें मोबाइल ऐप से सूचना देता है, तो विद इन मिनट्स वी विल ट्राई टू क्लीन इट. और या वहां की जो भी इश्यूज होंगे उस इश्यू को हम सेटल करेंगे. इस ऐप की दोनों की योजना भी है हमारी कि हमसे जल्दी से जल्दी ही उनके सामने रखें. स्वच्छ भारत, स्वच्छ पर्यटन,
स्वच्छ भारत स्वच्छ स्मारक, स्वच्छ भारत स्वच्छ पकवान, इन सब विधियों के लिए हमने एक योजना शुरू करी है, हुनर से रोजगार तक। सामान्यतः जब आप दिल्ली से यहां से आगरा जाएंगे तो जरूर नहीं कि रास्ते में सारे 5 स्टार होटल ही पड़ेंगे, रास्ते में एक ढाबा भी पड़ेगा और उस ढाबे पर बैठकर हम भी खाना खाते हैं और जो हमारा फॉरेन डेलीगेट्स आता है वो भी खाना खाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज सर्विसेज ऑफ स्मॉलर ढाबाज ऑल्सो ऑन द वे साइड, बट इफ वी ट्रेन देयर पर्सन दैट हाउ टू होल्ड अ ग्लास or how to present the food when you serve them, I think this will make a big change. We have taken initiative of making this as a hunar se rozgar tak. We have tried to receive kar lo, unko aane dijiye. We have tried to take them also and train them also for this initiative. And I think that initiative has been that we have been able to train 2,25,000 number of youth between 18 to 25 years of the age in between this. That is also a big strength of ours, that we have been able to train a big number of people in this healthcare and this tourism industry, and we want to make it more hospitable. With different countries we had made MOUs. We have showcased India via 2-3 events we have organized. One was our theme, India was put on first, and World Travel Market held in Cape Town, where they got the best feature award. India got it. I participated in China as a guest country of honor in China International Tourism Market, and India Tourism won 3 awards for that. India Tourism Tokyo participated in International Travel Fair in Korea, and Indian Pavilion received 2 awards for that. So your presentation is being recognized at all levels. It's not that people of the world don't recognize you, but definitely we feel an itch when we say that we share less than 1% of the world tourism market. It is 0.68%. But for our country, that 0.68% also matters a lot. And we have been able to get about 72 lakh tourists last year, and this year it has crossed 80 lakhs. Where we have shared the world tourism share of growth of about 7% in last year, this time average growth has been about 3.5% or so, 7%, 3.7%. Your country has shown a growth of 4.7%. So we are in line with the, I on behalf of the host welcome our elder brother Chaudhary Birender Singh ji. आइए साहब, ये मेरा गांव है तो मेरी तरफ से विशेष स्वागत आपका। So you complete? You 5 मिनट के अंदर। हाँ, right. 4 मिनट। So we have taken certain initiatives towards tourism development of this case. And now very shortly we even propose that ITDC, which has got around 16 hotels, our government has taken a big initiative of disinvesting those 14 out of those 16 hotels. And let our services be at par. We are coming with a new tourism policy after 12 years, which will be a employment generator facility, which will take care of the modern needs of the tourism. We propose in association with the Railway Ministry that all our tourist-bound coaches, हमारी जो tourist-bound trains हैं, उनमें एक coach tourist coach के नाम से, जिसका कलर अलग होगा, जिसकी ambience अलग होगी,
we propose to have a tourist coach in all tourist-bound coaches. And one example we have put in from Delhi to Bodh Gaya via a Buddhist circuit, and it has been successfully being done over there. We have also proposed that all our tourist destination, the amenities services needs to be privatized. We are working on that also, that all security related services and all these things will be connected through these private services, and we believe that the services will improve. Friends, I have a request to make to you also. Many times political people say that our Prime Minister is an NRI Prime Minister. He has visited almost 30 countries in last 1 year. But let me compliment you also, that wherever he has visited, we have made a data out of that. The number of tourists has increased. So I think we have made use of his visits to the worldwide. And again, what strength we gather? Tourism is by perception. We always believe that it is the country's strength and country's perception which is taken to the corners of the world. I request to you as a media personnel also, that we have the richest strength of our heritage, culture, our tradition, our values. Just now I am coming from that Surajkund Mela today. 23 countries from the world have participated in that. The classical example of art and craft is being showcased there. Even in Rajasthan has got a lot to give to the tourism. About the history, we have the Jaisalmer, we have monuments, we have the Kilas, we have the good weather, the hospitality, and everything we have. But probably we have not been able to showcase ourselves in a proper manner. Now we have made up a point. अभी हम देखते हैं यूरोपियन से सीखते हैं हम लोग कि अगर एक छोटा सा मॉन्यूमेंट भी है तो उसकी बड़ी हिस्ट्री बनाकर, उसकी इमेज बनाकर, लाइट कस देकर इतने अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया जाता है. अब हमारे सारे मॉन्यूमेंट्स पे घुसने से पहले 4 से 6 मिनट का, 3 से 6 मिनट का एक कॉरिडोर होगा जिसमें से उस मॉन्यूमेंट के बारे में, उस किले के बारे में पहले बताया जाएगा. देखिए, ज्यादा से ज्यादा 1-2% लोग हैं जो गाइड्स का उपयोग कर पाते हैं. हम कहेंगे आने वाला हमारा हर गेस्ट will pass through that and will be showcased that what this monument is about. These are the certain initiatives which we have taken. लेकिन हमें आपकी मदद की भी जरूरत है. आपकी मदद की जरूरत है कि अपने इंडिया को अगर हमें शोकेस करना है तो उस एक सकारात्मक सोच के साथ कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया था कि गिलास आधा खाली है और आधा भरा है. ये मेरा परसेप्शन है कि मैं इसे कैसे देखता हूं कि आधा खाली क्या है और आधा भरा हवा से है. ये आज हमें उस सोच को डेवलप करना होगा. हमारी कुछ कमियां हो सकती हैं, हमारी वीकनेसेस हो सकती हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ्स हमारी वीकनेसेस से ज्यादा है. हमारी टूरिज्म के क्षेत्र में जो परसेप्शन है कि इंडिया एक अनसिक्योर कंट्री है, बहुत सारे पिछले दिनों एक हंगामा मचा कि साहब टॉलरेंट है, रॉयल टॉलरेंट है, इस तरह की बहसें शुरू हुई. मैं चाहता हूं उसमें मीडिया के लोग एक कदम आगे आए. आई रिक्वेस्ट यू टू कम फॉरवर्ड, टेकिंग परसेप्शन ऑफ व्हाट इंडिया इज अबाउट क्लीनलीनेस, अबाउट सेफ्टी, सिक्योरिटी टू द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड. आई विश यू शुड ज्वाइन हैंड्स विद अस. मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे अभी साउथ अफ्रीका में गया. मैं सवेरे 6 बजे होटल के कमरे से निकला और मैंने कहा मुझे मॉर्निंग वॉक करनी है. वहां गया हुआ था कि आप सिक्योरिटी जोन में हैं. आप समझिए, मुझे होटल के गेट से 10 गज दूर पर रोक दिया गया उनके पार्क में घूमने से भी कि साहब इट इज नॉट सेफ टू हैव ए मॉर्निंग वॉक. और हम अपने इंडिया को अनसेफ बताते हैं. व्हाई सो? इट इज आवर ड्यूटी टू शोकेस आवर इंडिया, a tolerant, a safe, a clean, a hospitable country, and we need your help in this matter. With these words, I thank you very much. And there has been some delay in flights and all those things. You've been kept waiting for that purpose. I apologize for that. And we seek your guidance and your valuable suggestions in the matter of how can we take this tourism to the newer heights. Thank you very much. Thank you, Honorable Minister, sir.
We will take questions jointly. I think because of the time constraints and ministers also have to leave unfortunately because of the flight delay. जैसे कहते हैं गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है. The NDA government led by our Prime Minister Shri Narendra Modi has refocused his attention to bring about radical socio-economic transformation in the lives of rural masses. I am truly privileged and honored to present before you the Union Minister for Rural Development, Drinking Water and Sanitation and Panchayati Raj, Shri Birender Singh Ji, who has come here after detailed review meetings of the flagship schemes in Jodhpur, Pali and Jaipur. I welcome you, sir, on behalf of Press Information Bureau and on behalf of regional editors across the country. I must also tell you, today's dinner is sponsored at his behest, and we are grateful to you, sir. And, sir, the floor is yours, but Prime Minister will make very brief remarks. You already know about the scheme, so I think you should utilize the time to ask more questions. Thank you. Over to you, sir. दोनों में लिए सर बिकॉज फ्रॉम ऑल ओवर द हिंदी थोड़ा साउथ से भी जर्नलिस्ट है हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलो in the Ministry of Civil Aviation and Culture, and you, those who are participating, our very senior leaders of media, I was thinking when I was rushing from Jodhpur to this place that I would be late by more than 1 hour. But thanks to Mr. Mahesh ji, that apologies from his side, and I am on time in a way. My ministry is dealing with the Swachh Bharat mission, that is one of the prominent flagship program, rather mission, and also drinking water for rural areas. So broadly, if you want to know that as far as drinking water is concerned, 85% of drinking water is available only from groundwater and 15% is from surface water. So when we took over, the first priority which Prime Minister wanted, that let this trend be reversed, and in the next 7 years, I mean up to 75th anniversary of our independence, we would be achieving this target of 85% of drinking water from surface water, and 15, of course, where there are difficult areas or there is no possibility of surface water, we may have to be dependent on that. And fortunately or unfortunately, Rajasthan is the place where you are all gathered here. Here the problem is, as if we compare other states of the country, Rajasthan is really in need of
not but to talk of irrigation. Drinking water is a big problem, big challenge here. And most of the fluoride habitations, most of the saline habitation, these are, majority are in Rajasthan. So this is one program of our ministry, and the other is Swachh Bharat Mission, where you know better than me, and better would be you should ask questions so that I can give you reply instead of explaining what is Swachh Bharat Mission and how we are going about. The one more ministry, that is Panchayati Raj. For your information, we are moving a legislation, rather amendment of the Constitution in the coming budget session, where it's already provided that the representative, woman representative, their term for 5 years is in one ward or block, whatever you say. And after that, when the second election or the second term is there, then that block is not reserved for women. So one amendment which we are bringing is to make sure that at least there should be 2 terms for one block, where one can think of getting elected, that she is not only for one term of 5 years, but if she performs, she may be elected for the second time from the same block. And another very important amendment in the Constitution would be 50% representation in Panchayati Raj system to the women of, which of course they are 50%. These are 2 very important amendments which we are bringing in this coming budget session. One more important factor in Panchayati Raj is, this is the first time that we have accepted the recommendation of the 14th Finance Commission in toto. That means now panchayats, the number of panchayat in our country is 2,46,000. 2,292 crore rupees are placed at the disposal of the panchayats for 5 years. That means the smallest panchayat will get 15 to 17 lakh rupees, and that too for 5 years. And if the size of the panchayat is somehow bigger, then that particular panchayat may get more than 1 crore rupees per year. So this is the direct transfer of the funds for the village panchayat. Earlier it used to be from state to district, which you call Jila Parishad, then from Jila Parishad to Block Samiti, and then to the Gram Panchayat. So, for this, there is a great need for technical people to support the Gram Panchayat. We have asked state governments to have a format, annual plan format of every Gram Panchayat, so that the money which goes directly to them should be utilized in a proper way, and that we are giving training to 10,000 barefoot engineers. So, and that qualification is not that important. Even a class 10 student can have that training, technical training, so that he can be helpful to the Gram Panchayat.
and also the same number of person to be trained for maintaining the accounts of the panchayat. So these are 2-3 very important changes which we have brought about in our functioning of the Panchayati Raj system. As journalists, you must be knowing that when we talk of devolution of powers to panchayats under the amendment, constitutional amendment of 73rd and 74th amendment, I am very frank on this account that state government are very much hesitant to devolve the powers, maybe financial powers, maybe executive powers, to the village panchayat, to the Jila Parishad, or to the intermediate bodies. And I being in assembly for more than 25 years, whenever this issue was raised for devolution of powers to the lowest body of our democratic functioning, MLA used to say, साहब ये अगर यही हमसे ले लिया तो फिर हमारे को कौन पूछेगा, फिर तो पंचायतों की बात रहेगी। तो इस तरह का विरोधाभास है और बहुत से राज्यों में अभी भी वो डिवोल्यूशन की जरूरत है, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। एक और मेरा विभाग है जो मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो है ग्रामीण विकास, दैट इज रूरल डेवलपमेंट। मैं खुद ये सोचता हूं, हैविंग ए 44 years political experience at my back, there is still a feeling that if you provide infrastructure, physical infrastructure to the gram panchayats, to the village, then the village is developed. But I don't agree to this kind of concept. On one hand, we say that we must ensure that there should not be migration from villages to the cities or towns. On the other hand, if you see what is left in a village, if you are from a village, you must be knowing that 50 years back, when the country got independence, the employment issue was remotely connected with the village life. There was no such issue as, you can call it, employment to the youth of the village. And now this is the biggest issue before the country, before the government, before any state government. And in my own opinion, if there are no active economic activities in a village, then the migration is bound to take place. And how to create those economic activities, that is the crux of the matter. That is the moot point on which I am talking of. Pradhan Mantri Narendra Modi ji, in his own state when he was Chief Minister, he experimented rural development, rural mission. And he explained to us, our cabinet, and to our ministry, that this is what I want. We have now come out, and on 28th of February, this mission or this scheme would be launched from Kerala. That is, that we would be creating cluster of villages. गांव के समूह जिसकी आबादी, जिसकी जनसंख्या 25,000 से 50,000 के बीच में होगी,
that can be having included 5 villages if the size of the village is bigger one, or it may consist of 20 villages if the village size is smaller. So in those 20 villages, we would be developing a nucleus where all kind of infrastructure facilities would be available to those villages. Those are the part of that cluster of villages. And there to ensure that let there be some economic activities so that job generation, job opportunities are there. And for that I can cite one example. Suppose in Punjab, I went to one of the villages where we are thinking of taking that village as the cluster. There, the main agricultural crop is quinoos. And the villagers explained to me that if Minister Saab, आप हमारे गांव में सेपरेटर लगा दो, सिर्फ सेपरेटर, कि अच्छे किन्नू को वो ऑटोमेटिकली एक तरफ निकालता जाएगा और जो थोड़ा सा हल्का है क्वालिटी में या साइज में उसको अलग निकालेगा, तो हमारा किन्नू जो 2 रुपए में बिकता है वो किन्नू हमारा 6 और 8 रुपए में बिकेगा. And that is not a big project. So what I mean is, if you think that the migration should not take place, it is only when you can provide some opportunities where they can compete with any kind of town or city's facilities, and also to see that the opportunities, job opportunities are there. And for that we are creating, and one cluster of village would be in the range of, cost-wise, in the range of 70 crore to 120 crore. And if we are not able to rope in any of the PPP partner, or government, state government is not being in a position to participate to their full capacity, then the critical gap funding we would be doing up to 30 crore. So this is how we are thinking, and this is how I think that if you say that let us explain or give us the definition of rural development, that is what I think, that this is the definition. सिर्फ वहाँ गलियां पक्की करने से, सड़क से जोड़ने से, उसको उस गांव में बिजली ले जाने से, उस गांव में पीने का पानी ले जाने से, अगर आप ये समझते हो कि उस गांव को आपने पूरे रूप में समृद्ध गांव बना दिया है, विकास उसका हो गया, तो मैं इस बात के लिए कभी तैयार नहीं हूं. तो इसलिए एक 300 क्लस्टर बनेंगे ये 3 साल में. इस साल में हम 100 क्लस्टर उसमें शुरू कर रहे हैं. और इसी प्रकार से जो, वैसे तो वो मेरी अपने महकमे की सिर्फ बात नहीं है, 23 मिनिस्ट्री ऐसी हैं जो स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं, किसी ना किसी तरीके से. आपकी भी होंगी 23 मिनिस्ट्री. उसमें हमारी मेन है स्किल डेवलपमेंट के लिए, और उसमें भी मेरा मत यही है कि स्किल डेवलपमेंट को, अब मैं अभी आंकड़े देख रहा था, मैं अगर आपको बताऊं तो आप भी शायद खुश होंगे, लेकिन मैं खुश नहीं होता ऐसे आंकड़ों से. अभी ये है कि हमारे यहां 24 लाख समूह हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, 24 लाख समूह, और हम उनको 52,000 करोड़ रुपए का बैंकों से उसको जोड़ के फंडिंग करवाते हैं, और सबवेंशन के लिए 4% तक उनको हम अपने यहां से फैसिलिटी है कि उनको 4% कंसेशन मिले, और जो अच्छे पे मास्टर हैं टाइम पे देते हैं उनको 3% और. तो बैंक से अगर उन्होंने 10% पे उठाया तो 3 या 4% पे वो वापस कर सकते हैं.
लेकिन कई बार मैं सोचता हूं, और आप भी सोचो, कि गांव के आदमियों को आप सिर्फ ये समझते कि वो पापड़ बनाएं महिलाएं, यही उनका काम है. Why we should not compete with the people, those who are making money? Any kind of, there is one profession in this world where income is not multiplied. Otherwise, every profession in this world where income is multiplied, maybe business, maybe industry, maybe even government job, maybe even having a political profession. But the Kisan is the only profession, agriculture is the only profession where you can think that this year you have earned 1 lakh, next year 1,20,000, next year with good crop 1,60,000, and fourth year you may touch 2 lakh. But by that time, the man who is sitting besides me as a businessman or as an industrialist, he would be golden, usko jo aapke wahan गोल्ड कार्ड देते हो ना आप, उसमें बैठाने के लिए, हवाई जहाज से पहले बैठाने के लिए जो लॉन्ज है, उसको वो तो गोल्ड कार्ड में बैठा मिलेगा, और मेरा जो आदमी है वो बस स्टैंड पे खड़ा मिलेगा. इतना फर्क है. एंड व्हाट आई से इज, दिस इज नॉट only in our country, this is a universal. And sometime, as a political man, I am not an economist, but sometime I feel as a politician that what kind of economics is this? I read one of the news item about a year back when this world touched the population of 700 crore. When the 700 crore child was born, there was a survey on the other side of the news that the total wealth of this world, maybe wealth in the sky, maybe this what we are seeing, and maybe underground, total wealth of this world is 20% of the wealth is in the hands of 1% of population. And 54% of the wealth is in the hand of another 23% population. That means 25% of the population commands 3/4 of the wealth of this world, and rest 75% of the population is that you can't say that they are owning 25%. They are just, they think that they don't have the share. So this way, I am from a different party. I came from Congress. I had a stint in Congress for 42 years. When I realized that here is a man who happens to be a prime minister of this country, and the country has given his mandate after 24 years of fractured mandate of parliament, Narendra Modi's leadership created an atmosphere in this country, and the voter of this country made it a point, okay, give him the clear mandate. On one account, I would say, that is my last citation or example or whatever you call. Prime Minister gave us the detail that the total banking system consists of 55,000 branches all over the country. And in those 55 branches, the accounts are of 3 crore 40 lakh, the number of accounts. That means if you consider one account is one family, that means 17 crore families out of 17 crore population is enjoying the facilities of the banking system, and rest of the 109 crore log, they are totally out of the economic development of this country. So what Modi ji thought is that every family should be connected, and when he launched this thing, now we are
having 19 crore 50 lakh accounts all over the country. That means about 78% population is now in the banking system net. And when this we achieved, initially there were news that these accounts are only accounts, not operational one. But now the latest figure available with us is that 67% of such accounts are totally functional. So this way, जब आप ये कहें कि what are the achievements of our government or my ministry or my colleagues' ministry, I don't want to cite any of our achievement, but one achievement which is the biggest one and which is not achievement, which is, this is initiative in a way, that the entire country should have total financial inclusion or infusion if we are to move as a nation, not to see that who is the poorest, who is at the last, and who is the top people of the country. तो ये बात जो है, ये मैं ये समझता हूं कि इससे देश की आर्थिक अवस्था में जो भागीदारी है, जिस गरीब की भागीदारी है, जिस किसान की भागीदारी है, वो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी. ये हमारा विश्वास है और यही हमारी सबसे बड़ी मैं उपलब्धि मानता हूं. ये बात मैं कहना चाहता था. Thank you, Honorable Minister, sir. We will take a few questions now, but I request you to be brief in your asking the question. Please, one minute, please state your name, which paper are you from, because it's a regional editors conference, and point out to whom you would like to ask, so that there is all your colleagues also get a chance. Thank you. Very nicely you said, very inspiring. 25 जनवरी को क्या हो गया? राजस्थान के टूरिज्म के बारे में कैंपेन लॉन्च हुआ. आप बताइए फिर. देखिए, मैंने कहा ना कि राजस्थान के पास बहुत कुछ है, उसे शोकेस करने की जरूरत है. और राजस्थान टूरिज्म को जिन ऊंचाइयों पर हम ले जा सकते थे, उन प्रयासों के तहत ये जो एक योजना शुरू की गई है कि राजस्थान के पर्यटन के बारे में हम उन विज्ञापनों के माध्यम से जो एक छोटी सी लॉन्च हुई है, मुझे उम्मीद है कि उसके परिणाम अच्छे आएंगे और देश के और विश्व के लोगों को राजस्थान के बारे में जो कुछ जानने का मौका मिलेगा, उससे राजस्थान के पर्यटन में गुणात्मक परिवर्तन आएंगे. Yeah, please, one minute. Let everybody get a chance. You are holding a portfolio of civil aviation. There are two airports which are fully constructed. One is Bikaner, which are very near to my place, Sri Ganganagar, which is located in the border area, and second is Bathinda. So we are looking after the airports are ready, but they are not functional. How long it will take to make them functional? Sir, Bikaner Airport has been practically inaugurated by our cabinet minister also, and within a very short time, our new civil aviation policy is about to be launched. In our country, there are 476 airstrips, out of which only 76 are being utilized. As per the new policy, the other airports will also be utilized, where we are coming with a scheme of RCS, Regional Connectivity Scheme, and I'm sure Bikaner will be get a chance at the first. Bathinda is on the pipeline. Yeah. Ramalingam from Dinamala, Chennai. Please speak in the mic. Yeah. Hello. You have spoken about the cluster village format, which will come after some amendments, let it be. But this cooperative federalism is being followed by the central government. And many states think, even after the 14th Finance Commission approval and other things, they are saying that they don't get money. Now, according to the present scenario, the collector, particular politician, or the ruling clique are having a big say in the villages. Will you be able to, what is called, break this nexus and make it more viable?
or for the, sir, or for our tourism minister, you are going to make the tourism more buoyant, appreciable, but at the same time, the people who are going to connect with the tourists coming from other states or from other countries will be private partnership. That means they will not be government man. What is the nodal agency by which who can be controlled if they do anything out of the way by damaging the mode of good thinking? Yeah. First, I'll request Rural Development Minister to answer. Urban Mission, the selection of the cluster is the responsibility of the state government because they know better the local condition. The basic thing which I want to explain for cluster which is to be selected, that there should be a possibility that within 5-7 years that cluster should develop in the shape of a new town, and that is what the prime consideration or the condition for the selection of that cluster. And state government, because you have rightly said about federalism, cooperative federalism. Some states do take some political decision while making such selection. But I don't think that we have laid down certain, parameters for that selection. And ultimately, we have made a committee at the national level, which is to be headed by our Secretary Rural Development, who is to take a final view. But the basic selection would be from the state itself. Yeah. Now I request the Tourism Minister. Well, the Honorable correspondent, the editor has raised the question. You are all aware that tourism is a state subject. But we at the central, we define policies. Like we are coming with a tourism policy, and we have come up with this Medical and Wellness Tourism Board. Our aim of creating something new or monitoring agency, we at the center starts with, where we define policies, and any of such things which comes in the way, we make use of our private stakeholders along with the government agencies and the state. We try to make cohesive decisions in consultation with the state and private stakeholders, and that's how we go ahead with the matter. Yeah, please ask your question. Yeah. सर, मैं गोवर्धन चौधरी हूँ, फर्स्ट इंडिया से। मेरा सवाल पर्यटन मंत्री जी से था। सर, राजस्थान के टूरिज्म को लेके आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन जो नेशनल लेवल पे आप इनक्रेडिबल इंडिया का एड कैंपेन करते हैं, मैंने पिछले 15 साल से सारे स्टेट्स के एड हम नेशनल टेलीविजन पे देखते हैं, लेकिन राजस्थान को आज तक यहाँ क्या चीजें हैं, कितना टूरिज्म है, आज तक नेशनल पर्सपेक्टिव में आपने नहीं लिया। तो राजस्थान का टूरिज्म डेवलप कैसे होगा जब तक कि आप केरला के खूब एड देते हैं, उड़ीसा के एड आते हैं, जम्मू कश्मीर के आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के आते हैं, लेकिन राजस्थान को आज तक नहीं देखा। तो राजस्थान के साथ ये एड को लेकर के या प्रचार को लेकर इतना भेदभाव क्यों है? आगे आप क्या करेंगे? दूसरा मेरा सवाल ग्रामीण विकास मंत्री जी से है। मंत्री जी, नरेगा को लेकर के आपकी गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये पुरानी सरकार के खड्डे हैं और कुल मिला के आपने मैसेज ये दिया था कि बेकार की स्कीम है। आज हमें जो हैंडआउट दिया गया है उसमें आपने इसको नेशनल प्राइड के तौर पे आपने कहा कि ये नेशनल प्राइड है। तो इस 1.5 साल में आखिर नरेगा में ऐसा क्या हो गया, आपने ऐसा क्या कर दिया कि ये एक राष्ट्रीय गौरव का विषय हो गया? जरा ये भी समझा दीजिएगा। और दूसरा सवाल आपसे रिलेटेड था। 1 minute, please restrict your questions because let your other colleagues ask calls. नहीं, राजस्थान से रिलेटेड नहीं, आपने 3 क्वेश्चन हो गए, अभी ये 2 क्वेश्चन आंसर करने थे। प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन। विशेष दर्जा कब तक मिल जाएगा राजस्थान को? पानी पे विशेष दर्जा। देखिए, भारत सरकार जब पर्यटन की विज्ञापन की बात आती है तो हम बाय रोटेशंस करते रहते हैं। हमारी ये बात ठीक कह रहे हैं कि ज्यादातर जगहों पर, क्योंकि राज्य का विषय है, पर्यटन एक राज्य का विषय है, तो राज्य अपने स्तर पर अपने अपने राज्यों की प्रमोशन करते हैं। भारत सरकार उसमें अधिकतम जो पर्यटन के विज्ञापन देती है
नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी राज्य को नहीं दे सकते हैं। उन विजुअल क्लिप्स में, फोटोग्राफ्स में कभी कुंभलगढ़ का फोर्ट भी रहा है, ताजमहल भी रहता है और केरल की कोई बैक वाटर लॉगून्स भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं, जब हम सिलेक्शन करते हैं उनमें से तो रैंडमली करते हैं। उसमें हो सकता है राजस्थान छूट गया। अब ये इल्जाम आप मुझ पर मत लगाना कि मैं राजस्थान से हूं तो इसलिए छूट कैसे गया। आगे से इसको थोड़ा कंपनसेट कर देंगे। देखिए, आप उसको पढ़ें अच्छी तरीके से और फिर सोचें भी। पढ़ने से नहीं काम चलता, सोचने से भी चलता है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि नरेगा को जिस तरीके से चलाया गया, अगर आप स्मूथ चलेंगे तो गड्ढे कहां से होंगे, और गड़बड़ से चलेंगे तो गड्ढे होंगे। हमने 1.5 साल में उनको भरा है और इस कदर भरा है कि पहले नरेगा का पैसा सिर्फ गांव में मिट्टी उठाना, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह डाल देना, अब हमने 60% इसका फंड का इस्तेमाल आप कृषि और कृषि संबंधित कार्यों में कर सकते हैं। और इस साल के आंकड़े आपने पढ़े होंगे, 64% पैसा हमने कृषि संबंधित कार्यों में लगाया है। उसका सीधा असर प्रोडक्टिविटी पे होता है। और इसके साथ साथ जो इसमें शिकायतें आती थी, शिकायतें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जब सरपंचेस पे इतनी बड़ी रकम जाएगी और उनका तकनीकी ज्ञान में कोई सलाहकार ना हो, हिसाब किताब रखने में कोई सलाहकार ना हो, तो गलतियां होना स्वाभाविक है। हमने मनरेगा के माध्यम से अब उसका जो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस का ट्रांसफर सिस्टम है वो डायरेक्ट कर दिया। और पहली स्टेट है केरला। केरला में हमने अभी 1 जनवरी से शुरू किया है और उसमें हमारे यहां से पैसा सीधा उसके खाते में जाएगा, उसके अकाउंट में जाएगा। अप्रैल से हम इसको सारे देश में लागू करेंगे। तो लीकेजेस भी इसमें बंद हुई हैं और इसका स्कोप भी बढ़ा है। और तो और हमने सबसे बड़ा प्रयोग ये किया कि हमने राज्य सरकारों को ये कहा कि आपकी जो अपनी स्कीम है, कोई इरिगेशन की है, कोई पावर की है, कोई पब्लिक हेल्थ की है, इनको आप कन्वर्ज करें हमारे मनरेगा के साथ। उसमें जो लेबर कंपोनेंट है वो आप मनरेगा से लगाएं और दूसरा कंपोनेंट आप अपना जो आपका बजट है, जो आपने उसमें प्रोवाइड किया है, उसमें से करें। और 11,000 करोड़ रुपया पिछले साल 14-15 में हमने उसके साथ जोड़ के लगवाया है, जिससे कि एसेट्स की क्वालिटी भी अच्छी बनी है। बहुत से राज्यों से ये मांग आई कि एसेट्स के ज्यादा पैसे कर दें, 60-40 की रेशो गलत है, लेकिन हमने इसमें ये देखा कि ये जो इसका ध्येय ये है कि जिस गांव के युवा को काम नहीं मिलता, युवती को, उसको हम लेके आए। और गड्ढे भरने का एक सबसे बड़ा काम हमने ये किया कि कोई मनरेगा का वर्कर अगर 2 साल, 4 साल, 10 साल यही रट में रहेगा कि मेरे को 100 दिन का काम मिलेगा, मैं नहीं, हमने उनको कहा कि जो 100 दिन का काम मनरेगा का वर्कर कर लेगा उसकी एंटाइटलमेंट हो जाएगी, उसको हम स्किल ट्रेनिंग देंगे मुफ्त में, उसको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, ताकि उस जिंदगी से निकल के एक अच्छी जिंदगी की तरफ जाए, अपने जीवन को और आगे ले जाने की कोशिश करे। तो ये गड्ढे भरने का ये कार्यक्रम है और कोई मिट्टी से गड्ढे नहीं भरते। Yeah. Padamji, I'll come back to you. You wanted to ask that gentleman. Yeah, please. One question per head I will allow so that many of you can ask questions. I am restricted only one question. Thank you. I am Mr. Kamal Bhattacharya from Kolkata and from a Bengali Delhi. Sir, on National Mission on Pilgrimage Scheme, you have stated that on the first phase you have identified 13 cities. But are you going to identify Kolkata, the birthplace of Swami Vivekananda, Kalighat, and Belur Math in Howrah, West Bengal, and birthplace of Mahaprabhu Chaitanya Dev in Nadia? Thank you, sir.
Well, sir, it is a continuous process, and once because this has been started this year only, and in the first phase, as per the limitation of the budget sanction for this scheme was some 100 crore rupees or so. So that's why 13 places has been taken, and as a part of continuous process, more places will be added. The suggestion of Vellore Mutt has come to us earlier, and it is under priority consideration. Maybe we'll try to add some more states more cities in the coming times. Yeah, madam, you can ask your question. Yeah. Please speak in the mic, no? Keep the mic here. नहीं, उनको भी सुनना है. Just mic is all right. You just hold it near your. आप अपने मुंह के पास ले जाइए. सर, पर्यटन परिदृश्य में हम लोग विकास कर रहे हैं, लेकिन हमारी ऐतिहासिक विरासत है, जैसे कुंभलगढ़ है, चित्तौड़ का किला है, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं. देखिए, पर्यटन की दृष्टि से जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐसे स्टेज हैं, इन पर हम लोग एक और व्यवस्था पर भी अभी काम कर रहे हैं कि ये हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से काम करते हैं. हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि कोई भी किला होता है 10 किलोमीटर के दायरे में अपन खनन काम नहीं कर सकते. इसके बावजूद चित्तौड़ का जो किला है वहां पे खनन काम जारी है. देखिए, उस विषय के अंदर जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने जो कदम उठाए हैं, कोर्ट का आदेश हमें प्राप्त हो चुका है, जिसमें हमने प्रदेश सरकार को भी ये लिखा है और लॉ बाइंडिंग एजेंसीज को भी कि वहां खनन उस क्षेत्र के अंदर तुरंत प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे एक मॉनिटरिंग एजेंसी है. लॉ बाइंडिंग एजेंसी राज्य सरकार या पुलिस होती है. तो उस पुलिस को, राज्य सरकार को हमने लिखा है कि इस खनन को रोका जाए, और मुझे लगता है उसके अंदर काफी संख्या में रुकावट आई भी है. ब्रीफली मैं पदम मेहता, संपादक माणक राजस्थान निवासिक ओनली और जोधपुर का सबसे पुराना न्यूज़पेपर दिल्ली जलतदीप. मैं दोनों मंत्री महोदय से एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं. हमारा भारत गांव में बसता है, और गांव में आज आप बिशलपुर जाके आए, जोधपुर मेरे एरिया में, और गांव में आपने देखा है. मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि गांव की जो हमारे जो गांव के लोग हैं वो बहुत अच्छे एम्बेसडर पर्यटन की दृष्टि से बन सकते हैं. राजस्थान में ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जहां गांव को देखने के लिए भी फॉरेन टूरिस्ट और यहां के बाहर के जो प्रवासी है वो आते हैं. आज हमारे जो पूरे देश के जो गांव हैं उनकी ऐसी जो टूरिज्म स्पॉट है उनको साथ में डेवलप करके और गांवों को जो है कैसे आगे बढ़े जिससे उनका क्षेत्र बढ़े और बाहर आने वाले लोग भी ज्यादा से ज्यादा गांवों में उसका प्रस्ताव. देखिए, रूरल टूरिज्म और इको टूरिज्म के नाम से हमारे दो विभाग हैं, जो खासतौर पर 2 सर्किट्स भी डिक्लेयर किए गए हैं. ये बात ठीक कह रहे हैं आप कि रूरल टूरिज्म को हम बहुत बड़ी ताकत के रूप में डेवलप कर सकते हैं, जहां से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा, वहां के ग्राम के लोगों का भी विकास होगा. और अभी मैंने जैसा बताया कि उदाहरण के तौर पर अफ्रीका के अंदर एक गांव में मुझे ले गए, $200 की टिकट थी, अंदर जाके दिखाया कैसे तबला बजाते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, कैसे भैंस का दूध निकालते हैं. तो मैं समझता हूं इस ताकत को हम लोग यहां भी इस्तेमाल करने के लिए हम प्रयासरत हैं, और इसमें ग्रामीण विभाग का, आपके मंत्रालय का भी हम पूरा सहयोग इसमें. My question is to the tourism minister. I am V.S. Rajesh, news editor from Kerala Kaumudi, which is a paper daily in Kerala. My question is this: the Kerala government has repeatedly requested to declare Shabarimala as a national pilgrimage center. Your party also requested for that. The state unit of the BJP also requested for declaring Shabarimala as a national pilgrimage center. Will you take a decision on that? It is in the process of consideration. I have recently visited Guruvayur temple and Padmanabhan temple, and rather I asked the people from the Kerala that I want to visit the Shabarimala also in that perspective, but they advised me not to go during that busy season because this will create some administrative problems. So I propose to visit Shabarimala very shortly, and it is under high consideration that we'll declare Shabarimala as a pilgrimage. Yeah. सर, प्रदीप जैन, कोटा राजस्थान से, देश की धरती से. मेरा एक क्वेश्चन दोनों से है. राजस्थान में भूतल पर पानी की बहुत कमी है और अंडरग्राउंड वाटर पूरे राजस्थान में लगभग डार्क जोन में जा गए. आपके पास क्या विशिष्ट योजना है, जैसा आपने बताया कि अगले 5 साल में हम 85% ड्रिंकिंग वाटर सरफेस से लेंगे, तो राजस्थान के लिए विशेष क्या योजना है? पहला क्वेश्चन. दूसरा मेरा आपसे सिविल एविएशन से संबंधित है.
कोटा एक कोचिंग सिटी है, एजुकेशन हब है, और पिछले 30 साल से वहां हवाई अड्डा है। उसके बावजूद, कई डिमांड्स के बावजूद वहां हवाई सेवा चालू नहीं हुई है। और न सिर्फ कोचिंग हब है, बल्कि आसपास डिफेंस और न्यूक्लियर पावर के और बहुत सारी प्लांट हैं। इसके वजह से वहां पर बहुत लॉस है। तो क्या आप वहां पर कोई एयर सर्विस का कोई प्लान आपका है? देखिए, जहां तक पेयजल की बात है, आपने कहा कि कहां से लेके आएंगे। राजस्थान में 3 बड़े सोर्स हैं जो आपकी पानी की जरूरियात को पूरा कर सकते हैं। एक तो इंदिरा गांधी कैनाल, दूसरा कोटा का आपने जिक्र किया, वहां की चंबल रिवर, और तीसरा ये जो जहां मैं कल गया था, हाँ, वहां साबरमती नदी और नर्मदा, ये 2 स्रोत वहां से हो सकते हैं। इस तरीके से 3 कॉर्नर से हम प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा एम्बिशियस उनका प्लान है, जो कि हर गांव में पीने के पानी का सरफेस वाटर से इंतजाम करने की जो बात कही है। हमने राजस्थान गवर्नमेंट को ये आश्वस्त भी किया है कि आप को अगर वर्ल्ड बैंक से या जायका से या एडीबी से, जहां से भी आप पैसा अगर एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत समझते हैं, तो हम आपकी उसमें पूरी मदद करेंगे। और हमने भी, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके बता रहा हूं कि जैसे कहा कि राजस्थान में पीने के पानी के लिए छोटी छोटी और भी बहुत सी योजनाएं हैं, और वो सारी सरफेस वाटर पे आधारित हैं। तो बहुत सी तो ऐसी योजनाएं हैं जो आधे में पड़ी हैं, कहीं 70% काम पूरा हो गया। हमने ये कहा कि जहां आप कंप्लीशन के नजदीक हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पे पूरा करें, और उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट जो उनको लेके आए। I thank the Honorable Minister for Tourism, who has to catch a flight, so he will be leaving us immediately. Sir, thank you on behalf of PIB and all the regional editors. And Rural Development Minister is here. You can still ask a question. Luckily, my question is to the Rural Development Minister, Panchayat Raj Minister. I am Prakash Matthew from Malayalam Manorama, Kerala. So my question is that you are going to have an amendment on Panchayat Raj law regarding the reservation for women representation. Actually, what we see in Kerala is that most of the constituencies where they won, they are appearing for a second term as general candidate. So, in the real terms, the percentage of women in panchayats, in all the 3-tier panchayats, has increased because of that. So, will this amendment be actually a benefit, or will it again curtail the numbers to the definite numbers? It's a very long statement. What is your question? My question is that improving that, repetition of women constituency, reserved women constituency. So actually the numbers are increasing because second term. Now please ask your question. What is the question? Will it benefit? Will it benefit? Because what is happening is that women constituencies become general constituency. Even then women are competing from there. And all total, the number of women representatives in the panchayats are increasing. So if you put on the number again there, will the new constituencies come up? Will it? No. There is no question of new constituency. It's very simple amendment. A ward which is reserved for a woman candidate for one tenure, that would be now, we are planning to have it for 2 tenure. So that the instinct of giving lot of service to that, she should not feel hesitant that why should I do it when next time I may not be able to contest because it would be de-reserved. So, and only recently in my state, Haryana, the elections were concluded, and without such reservation, there are 54% seats which have gone to the women.
So men are left with only 46, and a time will come when we would ask for 33%. Last one question, sir. सर मेरा नाम सुभाष शिर्के, मैं न्यूज नेशन न्यूज चैनल से हूँ. मेरा सवाल ये है कि आपने जो बात कही कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इनको इंडस्ट्रियस बनाना चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियस हो, इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं. तो आपके पास क्या योजना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो इकोनॉमिकली एक्टिविटी उनकी बढ़ जाए? देखिए साहब, सबसे बड़ा तो मेरा एक काम है जो मेरी जिंदगी में सबसे नजदीक है, वेरी क्लोज टू माई हार्ट. When I came to know that in women self-help group, the managing body of the group advances loan to the individual and they take 24%, 36%. I said, no, I will not tolerate more than 12%. So that guidelines I have already issued. This is one way. अदरवाइज तो ये तो पहले साहूकार के यहाँ लेते ही नहीं थे. अगर 3 रुपए सैकड़ा लेना है, 2 रुपया सैकड़ा लेना है, तो फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब कुछ नहीं, फिर तो उनके लिए कमा के दो. तो इसलिए मैंने ये गाइडलाइंस इश्यू की हैं. सबसे पहला स्टेप ये लिया है, किसी वुमेन हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप से कोई भी उसकी अपनी संस्था 12% से ज्यादा, 1 रुपया सैकड़ा से ज्यादा चार्ज नहीं करेगी. और भी कई चीजें हैं, जैसे मैंने कहा, आपने मेरी सुना होगा कि सिर्फ पापड़ बनाना ही तो एम्पावरमेंट नहीं है. तो मेरा अपना ये ख्याल है कि हमने कुछ ऐसे ट्रेड और ऐसी चीजें नए तौर पे सीखने के लिए कोशिश की है जिससे कि वो उनका दायरा बड़ा हो. वो सिर्फ ये नहीं कि आजीविका पेट भरने के लिए नहीं, जिंदगी में आदमी का जब तक इनिशिएटिव आगे बढ़ने का नहीं होगा, तो इसमें काफी हमारे को कामयाबी मिली है. और बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे हैं. मैं अभी आज ही आपके किसी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, एक जगह वो कोई सब्जी लगाई है सेल्फ हेल्प ग्रुप ने, 40 लाख रुपए की टर्नओवर है उनकी, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की. तो ऐसे हैं, बहुत सी चीजें हैं. Thank you, sir. I think he also has to catch up. I've been waiting for a long time. If you don't mind, sir. Okay. Yeah. So, this is Sampath from the Hindu. You made a very excellent point about having rural activities in the villages, economic activities for them to develop. So, my question is, traditionally, the primary economic activity in the villages has been agriculture. So, would you rather take initiative to strengthen the agricultural economy, or would you want to get them to into other economic activities which is nothing to do with agricultural economy? This is a very good question, and you all know that when we got independence, our agriculture share in the GDP was more than 50%. Now it has reduced from 50% to less than 14%, 13.7%, and the hands involved in agriculture has reduced from 80 to 69. So this type of agriculture is not going to serve the rural youth of our country. You would astonish to know that 20 crore youth of our rural areas, if they remain dependent on agriculture, it would be a losing proposition for them. So we should strike balance, and striking balance means if agriculture is treated on the same footing, as I have explained, that this is the only profession where income is not multiplied, but there are avenues. I know if you are given opportunity for organic cultivation, you can increase your income 4 times. If you are having greenhouse cultivation, you can increase your income 3 to 4 times. So these are the ways, because 80% of the farmers of our country, they are having less than 1 hectare of land. So in that situation, you are to find out new ways to see that how the production improves, not gradually. It should have a quantum jump if we want to make agriculture a profession with lot of attraction.
Thank you, Honorable Minister, sir, on behalf of PIB and regional editors, taking your time off and you made it. Thank you very much.